Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. I am here for a training session and my training mode is on. It will not be a lecture. It is a training session and it will be a two-way session, not only bombardment of information from this stage, rather it will be interactive session between us. I will learn from you and I hope, I expect you will learn something new from this stage today. And I bet आपको अच्छा लगेगा, you will enjoy it, you will learn many new things. और अगर आपको मज़ा ना आए तो पैसे वापस उस्मान के लिए पैसे के वापस करें। और अगर मज़ा आ जाए आपने नई चीज़ सीख ली तो then arrange such kind of trainings again and again and again. I know last month or last few weeks earlier, some of your students from this college, they visited Abdul Wali Khan University. I'm thankful to the principal Saab, Mr. Usman and all the faculty members who brought their students to Abdul Wali Khan University, Mazan. And I invite you again to come to Abdul Wali Khan University again and again and again. That is your institute. Or Usman, I'm so proud of him. He remained my student in MPhil. He was astonishing, amazing and bright and excellent. जिस तरह principal साहब जो synonyms use करते हैं when he is praising someone. So all those synonyms of praise are due for Mr. Usman. And again, I'm so happy this is my first time in Deer. I have been to many northern areas and I have been to 15 countries of the world and all my travel was sponsored. I have never to any country with my budget. It all was sponsored. I got my PhD from China. That was a fully funded scholarship. Postdoc from Germany under that fellowship across the Europe, North America, Asia, different countries. And I can see many bright stars and many bright students like Usman, Mr. Usman. A bright future is awaiting for you. आप में से, आप ही में से कोई आगे आके उस्मान होगा, कोई आके प्रिंसिपल साहब बनेगा और कोई आके ताहिर उस्मान बनेगा. So just move to the training session और ये बातें बाद में फिर होती रहेगी. Let's begin with the presentation. Next slide, please. My subject is genetics. I'm geneticist by profession, my postdoc in genomics, but I'm a chapter head of Pakistan Biological Safety Association for Khyber Pakhtunkhwa. So biosafety, genetics is my profession and biosafety is my passion. Today I'll be talking about my passion. Or I have trained thousands of students across Pakistan, many professionals. In COVID-19, I work a lot with the health department, with the, in our university, in different universities, talking about safety, biosecurity, biorisk management, bioethics. So ये उसी की कड़ी है. आज हम biosafety और biosecurity पे इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे और procedures and protocols which are intended to keep human beings safe from the pathogens. वो सारे तरीके, वो टेक्नोलॉजीज, वो टूल्स जिसमें हम इंसानों को, खुद को, अपने को वर्कर्स को और अपने माहौल को बचाते हैं किससे? पैथोजन से, जर्म से, बग्स से. ये बायोसेफ्टी है. और बायोसिक्योरिटीज आर द प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस व्हिच आर इंटेंडेड टू कीप bugs and microorganisms safe from human being, from the misuse of human being. And intentional misuse. मैं इसको और सादा अल्फाज में समझाता हूँ. बायोसेफ्टी में हम इंसानों को, खुद को, अपने को वर्कर्स को, अपने माहौल को बचाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनके रिस्क से. जबकि बायोसिक्योरिटी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बचाते हैं कि उनका मिसयूज ना हो. इंसान, हम, हमारे को वर्कर्स, हम इनका मिसयूज ना करें. ठीक है? हेलो. सो बायोसिक्योरिटी में हम पैथोजेंस को बचाते हैं इंसानों से और बायोसेफ्टी में हम इंसानों को बचाते हैं पैथोजेंस से. राइट? पहले ख्याल ये था कि अगर हम एजेंट्स का ख्याल रखें, और एजेंट्स मींस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखें तो हमारी बायोसेफ्टी मेंटेन रहेगी. लेकिन अब ये है कि एजेंट
इन्वायरमेंट इसके साथ साथ ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही इन्वॉल्व है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ। तो ये तीनों मिलकर काम करेंगे, फिर हमारी बायोसेफ्टी और बायोसिक्योरिटी जो है वो इंटैक्ट रहेगी। अगर इसमें से कोई पिलर मिसिंग है या प्रॉपर काम नहीं कर रहा, मींस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, हमारा एनवायरनमेंट है, ह्यूमन बीइंग है, तो ये तीनों मिलके हमारा सेफ कल्चर हो जाता है। तीनों मिलके इंसान इसमें जरूरी है। नेक्स्ट।